Jotono lam chok so rajahani khopo channel dekhain mukhe dobin chong pringse Mizoram Assam Tripura Manipur Indian phatar tonai Bangla haktor Myanmar haktor joto kobru khopono nai so tonai rao miawa Indian parliament no sangsad achuk laithing yo Narendra Modi Prime Minister bongs kangwana press meet ke kau sa soye tongo abode ke wa no mia puilani sangsad achuk mawa akhe birodi raupono brown jan jani political alada thone rok thumye komarok chalaye salayo abodi khiye miani parliament puila ma achukmo tini oksangmani somoy wo bodi khiye hu chau ke parliament singyo tung phlammono ha maming ke bo parliament ke achuk laimo parliament sangsad achuk laimo ke mian ching rai saye bo December 19 jora boro tongnai bo parliament sangsad achuk laimo bo bari ke hur chau ke se kauka sale ba hakibung khai thangnai pho tongo bo dikhe onglaye tongo speaker bung sasa ono bai khoye thomoro phono no wo buju khela maya khema to ambo ye 17 ये सिर्फ कोई रिचुअल नहीं है, राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने के जो प्रयास चल रहे हैं उसमें ऊर्जा भरने का काम ये शीतकालीन सत्र भी करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भारत ने लोकतंत्र को जिया है, लोकतंत्र के उमंग और उत्साह को समय समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है। गत दिनों बिहार में जो चुनाव हुए उसमें भी मतदान के जो विक्रम हुआ है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। माताओं बहनों की जो भागीदारी बढ़ रही है ये अपने आप में एक नई आशा, नया विश्वास पैदा करती है। एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती और इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के भीतर अर्थतंत्र की मजबूती, इसको भी दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। भारत ने सिद्ध कर दिया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। जिस गति से आज भारत की आर्थिक स्थिति नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर जाने में ये हमें नया विश्वास तो जगाती है, नई ताकत भी देती है। साथियों, ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एकाध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं। Now, the Honorable Minister is responding. No, dividing opposition. Oh, 1 minute. I have no interest in dividing you. No. He is responding, he is telling, he is coming back. He is not saying no. He is not saying no. He is saying he will come back. Let him come back. This is what we have discussed yesterday also. Everybody was there. Yes, please. Others please sit. Leader of the opposition, yes. Sir, it is not one party, two party, four party. It is the decision of
all opposition floor leaders, we have taken decision. In the morning, in my chamber, we met, all opposition party leaders met, discussed, and we should take this SIR matter first, and otherwise we all will have to protest against this. That's why I request the Parliamentary Affairs Minister, don't divide us. If you try to divide us, we will be more strong. No. And this is a cheap, Kharge ji. sir, cheap gimmick. They are doing it. You can't divide us because we have come with ideological background. It is not like lifting from here, there. Let me put my word. You have asked, and the ministry has responded. He will come back, and he is not rejecting your demand. Let him come back. You should give some time. Let him come back. This is what it has been agreed. Sir, the last session was washed out completely. There is a trust deficit. We want the assurance. Why? Sir, very humbly, we want Parliament to run. Why doesn't the government want a discussion when everybody here wants a discussion? No, he is not saying, he is not denying yours. No, please sit down, please sit down, please sit down. The same subject need not be raised by everyone. He has, tell me. Sir, No. Sir, I will give you a chance. Sir, Honorable Chairman, sir, our request to the Honorable Minister is that let him uphold the statement which he made. He said that the government is ready to Purbe se rajani sadin khongo taole rajani sadin uyan bo ebo rajani no lokbo bon khenai himokhe tauke